Hello everyone, I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concepts of mathematics. Whether you are from BE, BSc or diploma background or you are preparing for your competitive exams, I am here to help you all. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए सीरीज नए टॉपिक के साथ। क्या है वो टॉपिक आप सबको दिखाई दे रही होगा। यस, आज हम देखने वाले हैं सेट। क्या है सेट? सेट एंड रिलेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। आज के इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं सेट का विद द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फॉर 12th 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, राइट। 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जेईई में पूछे जाते हैं। सो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिक डिस्कस करेंगे क्या है सेट, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर इसके रिलेटेड आगे के वीडियो में और भी ये एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। क्या है सेट? व्हाट इज अ सेट? एक्चुअली हम लोग बचपन से या फिर 11th 12th के पहले स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स से जब थे 9th 10th 8th 9th 10th बचपन से हम देखे जा रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स, दैट इज फ्लॉक, फैमिली, टीम, राइट। तो ये सब क्या एक्सप्रेस करता है? अ फ्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ शीप्स, राइट। फैमिली, कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स, और यू कैन से अ टीम, क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम। तो ये सारे क्या है? एक टाइप ऑफ कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अ पर्टिकुलर, यू डोंट टेक इट एज अ ऑब्जेक्ट वर्ड, कंसिडर इट एज अ कॉमन नेम। ओके, सो एक कॉमन कलेक्शन है। तो ऐसे कलेक्शन को क्या कहा जाता है? मैथमेटिकल टर्म में कहा जाता है सेट। ओके, so what is a set? A set is a collection of well-defined objects. Okay, as we said, it is a collection of well-defined objects. Okay, so क्या है ये well-defined objects? मतलब क्यों बोला गया है? Suppose हमें पता बोला गया है कि find all the even numbers. Whatever even numbers exist between, say, 1 to 200. अगर सारे इवन नंबर्स हमें फाइंड आउट करने 1 to 200 में, तो क्या होगा? वो क्या होगा? 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 200, वॉट एवर द टर्म्स आर। तो ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे जो नंबर्स है वो वेल डिफाइंड है। मतलब ये इसके आगे या फिर अलग कुछ नहीं आने वाले, यही नंबर्स आने वाले, राइट। सो दिस टोटल कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स इज नोन एज अ सेट। बट अगर हमें बोला गया है, से सपोज आपको बोलता है, आप सबको पूछा गया है, विद आई आस्क सपोज व्हाट इज योर फेवरेट डिश, व्हाट इज द फेवरेट फूड यू लाइक, सो ऑब्वियसली द फेवरेट डिश विल डिफर फॉर ईच ऑफ अस। मेरी फेवरेट डिश कुछ अलग होगी, आप लोगों की कुछ अलग होगी, राइट। सब सारे लोगों की फेवरेट डिश अलग होगी। तो ऐसे केस में वो एक वेल डिफाइंड नहीं बनता है, क्योंकि अलग अलग टर्म्स आते हैं। सो इसीलिए उसे उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। ओके, सो सपोज हमें पूछा गया है हाउ मेनी हैप्पी पीपल आर इन योर टर्म। How can we say? How can we define it? We cannot define it, right? So such collection cannot be called as a set. So a particular or defined, well-defined term के collection को क्या कहा जाता है? Set कहा जाता है। Sorry. ये concept कहाँ से आया? This concept was basically developed by a German mathematician known as George Cantor. Okay, he was the mathematician who developed this concept and put it in front of us. Okay, so now हमें पता तो चल गया क्या है set, and what are now the object in this set क्यों क्या कहा जाता है? The well-defined objects in a set is known as an element or member of that set. Okay, so this 2 4 6 8 जो हमने लिखा, ये क्या है? Members है ये this set of even numbers between 1 to 200. So how do we denote it?
how do we denote a set? We can denote a set by any capital letter, A, B, C, D, whatever. You can say S is equal to this, say M is equal to set of even numbers. तो M क्या हो जाएगा? M हो जाएगा 2, 4, 6, 8 and so on. So you can denote it by any capital letter, and the elements are basically represented by small letters, small A, B, C, D, whatever. Okay, so how do we read it out now? Suppose if X is an element of a set, how do we express it? We express it as X belongs to A. मतलब suppose हमें दिया है गया है set A is equal to X, Y and Z. ऐसे एक set दिया गया है. Now, how do we call this X? What is this X? X is a member of A. So we call this as X belongs to A. And how do we express in mathematical terms? X, this symbol is known as belongs. This A symbol corresponds to the word belongs. X belongs to A. और अगर suppose हमें दिया गया है B is equal to A, B, C. Okay, this is a set. B is a set of elements A, B, C. But does there exist X in this set? इस set में X exist नहीं करता है. So X, we call it as X does not belong to B. And how do we express X? ये जो symbol है उसको हम cross करेंगे. It means does not belong to B. So अगर एक set दिया है उसमें elements है तो वो elements belong करते हैं उस set को, and mathematical terms में इसे इस symbol से express किया जाता है. Okay, अगर नहीं belong करता है तो just cross out that symbol. It represents does not belong. I hope सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है एक set. ठीक है, so चलो. How do we now represent a set? अभी हमने देख लिया एक टाइप जहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था कर्ली ब्रैकेट्स में. ठीक है, इस ब्रैकेट्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है. सो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट. फर्स्ट वन इज रोस्टर, और यू कैन कॉल इट एज टैबुलर, और यू कैन कॉल इट एज लिस्ट मेथड. लिस्ट मतलब एक लिस्ट और एक ऑर्डर में उसे लिखते जाओ. उस you can represent it that way. Second method is you can represent it in set builder method. क्या है वो देखेंगे आगे. और थर्ड मेथड है express it in Venn diagram. Venn diagram मतलब diagrammatically भी express कर सकते. So first method क्या कहता है? The name is itself list method. मतलब list it out, list the elements means by separating it with a comma. So for example यहाँ मैंने लिखा है A is a set of months of a year. So we all know what are the months: January, February, March, April, May, June, right? So all these elements, January, February क्या है? Elements है. And when we separate out with comma, ये एक list हो जाएगी elements की, that is set of months की, and they express it in curly brackets. Together it will become a set. Now it doesn't matter हमने कौन सा मंथ पहले लिखा है. I can also write this in this way: December, January, April and so on. But I should know, I should write all the elements. Okay, I should not miss out, because all the months यहाँ पे बोला है तो सारे months लिखने जरूरी है. It doesn't matter which order you have written. Okay, it is immaterial. If you can read out the note, I have written out in note also. By listing the elements of a set, the order in which the elements are listed is immaterial. Okay, suppose for example we are supposed to write or obtain a set of all the vowels, or you can say set of all the consonants. Vowels क्या है? A, E, I, O and U. Say B is a set of all the vowels, right? These are the vowels we know. B, so we can also write it as B is a set of vowels in alphabetical order. So it becomes a set, right? So this is a method, that is a list method. Means what means kya? You can express it by the elements by separating it out with a comma. Okay. Second method क्या है?
set builder method. Set builder method क्या means? In this method we describe the elements of a set by specifying the property which determines the elements of the set uniquely. Means what? We specify it particularly. अभी यही देखो, हमने लिखा है set of is A is a set of months of the year. हमें पता है क्या कौन से months है, जनवरी, फरवरी, ये मार्च. So you can, instead of January, February, March, you can also express it as, name it as some x. Say it is some x which defines x is a month of year. So ये x क्या हो सकता है? अभी this x can take any value. X can be January, x can be February, x can be March. Okay, depending on whatever the element we need. So similarly, say for example, we have to express B is a set of vowels. B is a set of vowels. तो B क्या हो जाएगा? B actually है set A, E, I, O and U. तो B क्या हो जाएगा? We can express it as B is such that X is a vowel. I hope everyone is getting it. Okay, suppose we are having a set, say S. S is a set of all days in a week. So what are the days we have? We know Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. These are the days in a week, and you can also express this as S is a set, S is equal to X such that X is a day in week. Okay, so X will take the value Monday, X can take value Tuesday, X can take value Wednesday, so on. So this is one of the method to express a set. One first method says you can directly list out the elements, or second method says elements के लिखने के अलावा you can call it by some name, say X, which represent that element. Okay, the third method क्या है? Third method है Venn diagram, that is pictorial or diagrammatical representation. Okay, so this concept or this aspect of Venn diagram was introduced by an English logician, John Venn. Okay, hence it is named after him, that is Venn diagram. Concept of set तो जॉर्ज कंटो ने एक्सप्रेस किया था, but Venn diagram का term it was expressed by John Venn. Now मतलब क्या, graphically you can say this elements can be put into circular triangles, or you can say any closed figure. Any closed figure we can use to represent a set. So यहाँ पे अगर देख रहे हो, a triangle is used, it is a closed figure. A triangle is used to represent a set of all the elements. What are the elements now here? 1, 2 and 3. So suppose this is a set S of the elements 1, 2 and 3. If you observe second, I have written it is an oval, or you can say circular form में भी लिख सकते हैं. तो oval में हमारे पास elements क्या है? So it is a set, say A, B, C and D. So elements को हम क्या represent कर सकते हैं? ऐसे Venn diagram में भी represent कर सकते हैं. And the elements here are shown as points. Okay, 1, 2, 3, A, B, C, D are these points which represent the elements. Okay, so ये थे ये methods to express the set. Okay, ये first method हमने क्या देखा? That is list method, or you can say roster method. Second method हमने देखा set builder method, और third method है Venn diagram method. Okay, now what is number of elements? Now how do we count? जो भी जितने भी elements उस set में present होंगे, that will give us the count of that elements in the set.
Okay, obviously the number of distinct element contained in a finite set, because वो क्या होगे, finite होगा, जो भी collection होगा. Now we have just look, what is a is x such that x is a month of year. So month of year क्या है, finite है. It is how many months are there in a year? That is 12. So 12 is the number of elements which is present in this set. Now how do we express this number of elements? We express this number of elements as n of a. N of a is the set number of elements which is present in a set. It is also called as cardinality of set A. So यहाँ पे A set का क्या होगा? N of A will be 12. Suppose B is a set. B is a set which says as x such that x is day of a week. So x is a day of a week, तो B क्या हो जाएगा? हमें पता है क्या है week. Days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Correct? How many days are there? 7. So n of B, that is number of elements in B, क्या होगे? 7. That is cardinality of B क्या होगा? 7 होगा. Okay, ये था basic. हमने आज देखा क्या है set, how to represent a set. आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे what are the types of set. I hope आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा. If you like my videos, please do like, share and subscribe my YouTube channel for more such conceptual videos, and also press that bell icon so that you will get notified whenever I upload a new video of a new topic. इसके पहले मैंने ऑलरेडी ये डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस की सीरीज कर लिया है. आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन टॉपिक्स को भी देख सकते हो. तब तक के लिए until we met with a new video, new topic. Thank you. Bye bye.